very good afternoon to all teachers. Today I want to tell a few lines on Teachers' Day. The day marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great educationist and the second President of India. Started in his honor in 1962, Happy Teachers' Day is an important occasion to recognize the contribution of teachers who not only impart knowledge to us but also build our personality. On Teachers' Day, we celebrate and express our gratitude to our teachers for their dedication, guidance and support. Birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a respected scholar, teacher and a second President of India. This is an occasion to honor the dedication, hard work and passion of our wonderful teachers. जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को मेरा दिल से प्रणाम, ऐसे गुरु को मेरा दिल से प्रणाम। न ज्ञान गुरुविन दिशा अनजान, गुरुविन होत न ज्ञान, गुरुविन दिशा अनजान, गुरुविन इंद्रिय न सधे, गुरुविन बढ़े ना सान, गुरुविन इंद्रिय न सधे, गुरुविन बढ़े ना सान। आदरणीय प्रबंधक महोदया श्रीमती कंचन भारद्वाज जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और मेरे शिक्षकगण, आज आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि 5 सितंबर का ही दिन शिक्षक दिवस मनाने के लिए क्यों चुना गया। तो आज का दिन 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वो एक अच्छे शिक्षक, विद्वान और महान नेता थे। उनका जन्मदिन बनाने के लिए कुछ बच्चों ने उनके सामने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर आज के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे इस बात पर गर्व होगा और मेरी तरफ से ये सभी शिक्षकों को एक किस्म का उपहार होगा। तो शिक्षक माटी के तन में वो जान डाल देते हैं, माटी के तन में वो जान डाल देते हैं, छोटे से मन में वो अरमान डाल देते हैं। यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, अगर वो हमारे व्यक्तित्व में जान डाल देते हैं। शिक्षक एक ऐसा अस्तित्व है जो छात्रों के जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता, ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता, भुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरुवे नमः। All I would like to give a bundle of thanks to all the teachers, to all my teachers who taught me and made me capable to impart my knowledge to the students. And secondly, I would like to give a bundle of thanks to Honorable MD sir who gave me this golden opportunity to teach in this institute. First of all, your dedication, passion and commitment to the noble cause of education is truly commendable. And to our students, I say this always, remember that education is not just about grades and degrees but about developing a love for learning and understanding the world around us. हम उनको हैंडल करते हैं कैसे, कई बार उनकी बातें इग्नोर करनी, कई बार उनको हमने समझाना, मोटिवेट करना, कई बार किसी भी तरह से हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो आगे बढ़े। और इस चीज़ के कई बार हमारे पास रिजल्ट भी आते हैं। मतलब टीचर डे है तो अब सारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं होते हैं, हमारे जैसे भी टीचर होते हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक दिन मुझे भी याद है कि जब जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। Teacher Day is celebrated to remember the birth anniversary of second President of India, Dr. Radhakrishnan. You will be wondering why the birthday of a former president is celebrated on Teachers Day. Mr. Radhakrishnan was a distinguished scholar and excellent teacher as well. He was so much popular among his students that he was worshipped. Once, while serving as a president, his student asked him to allow them to celebrate his birthday on 5 September, but he declined and asked them to celebrate it
Teachers' Day. Thus, we celebrate Teacher Day on 5 September to honor teachers towards their services towards society and nation. As we celebrate this day, let us remember that teaching extends beyond the walls of the classroom. Each one of us had a teacher, whether in school, in life, or in our personal experience, who has helped us to shape our journey. Teaching is not just a profession, it's a calling. It's just the art of nurturing minds and guiding individuals toward their best selves. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on September 5th, 1885 in Tirupati, India. He emerged as a prominent figure not only as a teacher but also as an esteemed academic and influential politician. As a teacher, it is a great privilege to be a part of your life, to share your hopes and dreams. Being a teacher is not just a profession, it is a calling and a lifelong journey of discovery. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Adyasmin Aksare Aham Swavicharam Prakritum Ichchami. Sarvpratham Sarvebhyo Namo Namah. Bhagavatyah Sarvebhyah Shikshak Divasasya Shubhakamanah. Yatha Bhavan Sarvah Janati. Adya Vayam Sarve Atra Shikshak Divasam Acharantah Sma. Asmakam भारतदेशे प्रतिवर्ष सितंबर मासस्य पञ्चदिनाङ्के शिक्षकदिवसः आचर्यते। अयं दिवसः अस्माकं भारतदेशस्य द्वितीयस्य राष्ट्रपतिस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य जन्मदिवसः अस्ति। सः महान् विशिष्टः आचार्यः अस्ति। तस्य जन्मदिवसः सम्पूर्णदेशे शिक्षकदिवसरूपेण आचर्यते। जीवने शिक्षकायाः महत्त्वं सर्वोपरि मन्यते स्म। शिक्षां विना मनुष्यः गन्तव्यस्थानं प्राप्तुं न शक्नोति स्म। प्रत्येकस्य छात्रस्य जीवने शिक्षकस्य महत्त्वपूर्ण भूमिका भवति। अस्माभिः सर्वदा अस्माकं गुरु